हेलो एवरीवन, क्या कभी आपने आपके नी में एक पॉप सुना है? हैव यू एवर हर्ड अ साउंड फ्रॉम योर नी? मे बी जब भी आप चल रहे हो, जब आप सीढ़ी क्लाइंब कर रहे हो, जब आप सीढ़ी से नीचे आ रहे हो या आप बैठने जा रहे हो। डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉप एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाई डज योर नी पॉप एंड व्हेन इज इट एक्चुअली डेंजरस। Welcome to the channel. My name is Dr. Manan Vora and I help you live your life pain free. Today we'll be discussing noises that come from the knee and how you can address them. और हाँ, मेक श्योर टू स्टिक टिल दी एंड, क्योंकि मैंने आपको बताया है कुछ नी फ्रेंडली एक्सरसाइजेज विच विल एक्चुअली हेल्प कीप योर नी पेन फ्री. लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी जो नी नॉइजेस रहते हैं, वी कॉल इट नी पॉपिंग और नी क्रैकिंग. दे आर एक्चुअली एक्सट्रीमली कॉमन, बट डोंट वरी, दे आर एब्सोल्युटली हार्मलेस अनलेस दे आर अकम्पनीड विथ एनी पेन. लेकिन आप पूछोगे, लेकिन डॉक्टर मनन, ये मुझे नी के नॉइजेस आते क्यों है? What are the possible reasons? I'll tell you. The first one is bursting of gas bubbles. Yes, even in your knee joint, gas bubble formation is possible. And when you move your knee joint, जब भी आप इसे extend करते हैं, वो gas bubble burst होता है, and that is the pop that you could be hearing. Number two, bursal irritation. अभी बर्सा क्या होता है? A bursa is a tiny sac that generally cushions the knee joint. In certain cases, this could be irritated, and when your kneecap moves and rubs against it, you may hear a pop. The third one is tight muscles. You could have extremely tight muscles near the knee joint and they may pull on the kneecap, making this pop sound. The fourth reason is the actual problem, जिसे हम pathological issues बोलते हैं. या तो आपका नी का मिनिस्किस फट गया है, या फिर आपको अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है, उसमें जो आवाज़ आती है उसे हम क्रेपिटिस भी बुलाते हैं. सो इन दीज केसेस इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद पेन एंड यू नीड टू गो गेट चेक. नाउ व्हेन टू सी अ डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपको सिग्निफिकेंट पेन है और देर इज नी लॉकिंग. नी लॉकिंग का मतलब है आपका जो पूरा नी रेंज ऑफ मोशन है, वहां देर इज सम अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और यू आर गेटिंग कॉन्स्टेंट कैचेज और स्टिफनेस ऑफ द नी जॉइंट, यू नीड टू गो गेट चेक्ड बाय योर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर. अभी बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम डिसाइड करेंगे कि क्या आपको एक्सरे की जरूरत है या आपको एमआरआई की जरूरत है, टू फाइंड आउट द रियल कॉज of this actual popping sound as well as the other symptom that you are coming it, be it pain or locking or stiffness. और जैसे ही वो रिपोर्ट्स वापस आ जाते हैं, we have a diagnosis and we make a particular treatment plan for you so that we can take away your symptoms and actually treat the actual cause. Now let's assume कि you are having this pop or cracking sound, लेकिन आपको बाकी और कोई knee symptom नहीं है. Here are a few knee exercises that you need to be doing right away to improve your knee health and ensure that you stay pain free. सबसे पहले आपके क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए फोम रोलिंग. ये आपके टाइट मसल्स को लूजन करेगा और आपके नीकैप पे कम प्रेशर डालेगा. नंबर टू, क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच. Stretching your quadricep muscle will help reduce the amount of stress that you put on your knee. Number three, fire hydrant exercise. ये आपके glute यानी कि बटक मसल्स को strong करेगा and will improve the mechanics of your knee joint. And number four, hip dominant squats. These will work your leg muscles as well as your gluteal muscles. इसके अलावा for general care you need to make sure you are in an ideal body weight range. If you are overweight, please focus on a calorie deficit diet and eat nutritious whole foods rich in protein so that you can lose some serious fat, and make sure you try to incorporate a little bit of strength training and walking 10,000 steps per day. And that's it. अभी आपको पता है कि नी पॉपिंग और क्रैकिंग क्यों होता है, in which cases it is actually a little worry and you need to go and get checked by a doctor. You also know some simple exercises to improve your knee health and how you can be one step ahead always to ensure you don't face any pain in the first place. Thank you so much for watching. As always, अगर आपके पास और भी कोई questions है, please drop them in the comment section. I answer all of them personally. Always remember to subscribe to the channel and do hit the bell icon for notifications. आपके लिए ये 5 सेकंड का काम है, but it helps me reach more and more people on this platform. As always, see you in the next video.